हेलो हेलो। कैसे हाल चाल है? एंड वी आर बैक विद सम मोर शेनानिगन्स। मैं जो लास्ट मैंने कुछ पूरा नवंबर महीना नहीं करा, दिसंबर के एंड में ऑलमोस्ट 2 महीने बाद आया हूँ मैं। क्रेजी। या 2 महीने बाद। ये तो आज का जस्ट डेली था। बट हाँ, लेट्स डू सम ऐसे टाइम पास। मेरा ग्राफ करने का मन था तो ग्राफ करेगा, वैसे उसके ऊपर का मैंने करा नहीं है, बट हाँ, वी शैल स्टार्ट फ्रॉम ग्राफ्स। मेरा ग्राफ करने का मन कर रहा है। ये तो सिंपल BFS करना है। BFS या DFS कुछ भी करो। So what we can do is, okay, ठीक है. So let's make a DFS function as mark grid, mark cell actually, I comma j comma. Do I need the grid? There's I don't think so. I need the grid. I j दे दो. Just make the grid of I and j को ये मैं mark कर चुका हूँ कि right, this is visited already. And then I can say इसके आसपास वाले में जाओ, right? Okay, so mn भी चाहिए. Okay, so लिख या ना लिखूं? ये एक भी दे देता हूँ, r comma c. Who the fuck cares? Right, if मेरा दीवाना भैया भैया. अच्छा, एक काम करते हैं, instead of doing all that shit ass, I can just say if not, जो मेरा I है अगर वो इस रेंज में नहीं है, और जो मेरा J है वो इस रेंज में नहीं है, राइट. अगर मैं इसको फिर वो डिमॉर्गन्स लॉ से वो भी कर सकता हूँ, आई कैन से ये दोनों होना चाहिए, राइट. बट हाँ, देन आई कैन जस्ट रिटर्न, कुछ नहीं करना. अदरवाइज आई एम गोना से ओ है मैन, उसको मार्क कर दो 0, एंड देन मार्क योर सेल फॉर I+1 कॉमा j कॉमा r कॉमा c तो सेम रहेगा. एंड देन यही सेम शिट आई नीड 4 more times, I mean 3 more times. I-1, I same j+1, I same j-1, right. चारों कोनों में देख लो और मार्क कर लो. दैट्स ऑल वी नीड टू डू. वरना वरना ओके, ये तो हो गया. एंड देन वी कैन जस्ट रिटर्न करने की कुछ जरूरत नहीं है, कुछ काम नहीं है अपना. नन रिटर्न कर दो. सो ओके, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू लेन ऑफ ग्रिड, राइट. यप. एंड कॉलम्स इज इक्वल टू लेन ऑफ ग्रिड ऑफ 0. कम से कम एक तो होगा ना. okay. ठीक है, रोज कॉलम्स है मेरे पास. देन आई कैन से फॉर आई इन रेंज रोज, फॉर जे इन रेंज कॉलम्स, हर एक उस पे जाओ, राइट. इफ ग्रिड ऑफ आई ऑफ जे अगर ये 1 हुआ, दैट मीन्स
फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमको स्ट्रिंग करना है. अगर ये लैंड है, राइट? If this is land, do what? That means अपना आइलैंड, एक हमको एक आइलैंड मिला है, तो आइलैंड कर दो +0 to 1 एंड देन वी कैन जस्ट मार्क दिस सेल एंड उससे पूरा आइलैंड मार्क हो जाएगा. रोज columns, right? And then we can just return our number of islands जो हम गिन रहे हैं. Okay, I fucked up something. अच्छा, एक और चीज़ करनी है. और ग्रिड ऑफ आई जे, अगर ये वाटर है देन आगे मत करो भैया, कंटिन्यू. आइलैंड, वैसे आइलैंड्स शुड बी द वर्ड, बट ओके, वर्क्स. लवली. इसका हो गया. Surrounded regions. Churches. M into M, X and O. अच्छा. To form a region, connect every host. Capture regions that are surrounded. Okay. Connect every host cell. Okay, horizontal. ठीक है, तो ये एक region है. Okay. And is this region surrounded? Yep. And none of the regions are on the edge of the world. ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एक भी एचपी हुआ तो वो रीजन को मैं कैप्चर नहीं कर सकता. राइट. ओके. So basically, does this mean तो कोई भी अगर आइलैंड का कोई भी पार्ट अगर एज पे है, दैट मीन्स वो सेफ है, और बाकी सारे सेफ नहीं है, राइट? दिस एग्जैक्टली व्हाट दिस मीन्स. सो लेट मी डू वन थिंग, मैं एजेस पे लूप लगाऊंगा, राइट? फॉर ऑल द एजेस आई एम गोना लूप, एंड देन उनको मैं स्पेशल से एस मार्क कर दूंगा फॉर एग्जांपल. एंड उसके बाद जो भी ओज बचे गए आई विल पुट दैट ऑन एक्स, एंड जो भी सेफ्स है उनको मैं वहाँ पे शो कर दूंगा. ओके, प्रीटी इजी क्वेश्चन. एक बीएफएस लगाना है बस. सो बीएफएस या डीएफएस कुछ भी लगा. Rows is equal to, let me again say mark cell. I need the I need the J, I need the R and the C. If if zero cell less than equal to I less than R है, and zero cell less than equal to J less than C है, and ये जो है एक्चुअली में कुछ होना चाहिए जिसमें we can traverse.
ग्रेड नहीं है, बोर्ड है। बोर्ड ऑफ आई कॉमा जे, दिस हैज टू बी एन ओ, राइट? अगर ये है दैट मीन्स हम कर सकते हैं, राइट? तो अगर ये नहीं हुआ, अगर ये नहीं हुआ, वी जस्ट वी कैन जस्ट रिटर्न, राइट? ओके, वरना व्हाट वी हैव टू डू इज बोर्ड ऑफ आई एन जे, this has to be safe, right? These are safe cells. Then I can say mark your cell I plus 1j, comma r, comma c, then I minus 1, j plus 1, j minus 1, right? And then that's all you need to do. Rows ka kar lo len of board. Columns can be your len of len of board ka 0, 1 to होगा, right? We have the rows, we have the columns. Next thing is I need to traverse for the edges. For I in the range, for I in जो मेरी रो 0 है एंड जो मेरी रो लास्ट है, एंड फॉर j in range, ये नहीं होगा, for j in range of columns, right? if ये मतलब टॉप फर्स्ट, ये इन दोनों का है फर्स्ट, ये board of I comma j is equal to o, that means जो अपना टट्टी है, that means ये safe है, right? So we can just mark this cell as safe, right? अब for the columns के लिए करना है मेरे को, for j in range 0 comma columns minus 1, sorry range नहीं आएगा, for j in ये दो चीज़, for I range rows, I think तो पहले मैं बोलूँगा ये रो में ये करो, ये करो, नेक्स्ट रो ये करो, ये करो, नेक्स्ट रो ये करो, ये करो, ओके। What I'm gonna do is if board of ये सेम चीज़ करनी है, राइट? एंड ये सारा होने के बाद जितने भी ओज बचे हैं वो एक्स हो जाएंगे, एंड जितने भी ऐसे वापस हो गए। फॉर आई इन रेंज रोज, फॉर जे इन रेंज कॉलम्स, इफ बोर्ड ऑफ आई कॉमा जे, अगर ये ओ है वी कैन से इसको कैप्चर हो जाएगा ये, सो दिस हैज टू बिकम एन एक्स, राइट? इफ बोर्ड ऑफ वन थिंग, अगर ये एस है सेफ है तो इसको वो कर दो, सॉरी वो कर दो, एल्स बोर्ड ऑफ आई कॉमा जे एक्स हो जाएगा, जो पहले ही एक्स है वो एक्स रहेगा उसमें।
राइट एंड देन कुछ रिटर्न नहीं करना. दिस शुड वर्क आई थिंक. लुक्स गुड. परफॉर्म्स गुड एज वेल. पहले क्या करा था मैंने? सेम शिट. लिटरली सेम करा था एस. साले रोज उठा रहा है. आई डोंट थिंक उठा सकता. डन. लिटरली सेम शिट करी मैंने. क्लोन ग्राफ ओके. समहाउ मेरा घी 2 सवाल में ही खत्म हो गया था. बोलिए मेरा और करने का मन नहीं कर रहा. ऑन गॉड. बट 10 मिनट की स्ट्रीम तो नहीं कर रहा मैं. You know reference of a node in a connected and directed graph written in deep code. ओके. या तो एम्प्टी होगा या फिर कोई लिस्ट होगा. तो इसको पता कैसे चलेगा मैं सेम ग्राफ तो नहीं दे रहा. रिटर्न नोड अगर मैं सीधे नोड रिटर्न कर दूं. तुम्हें भी इसे पता है. आई मीन इसमें क्या करना होगा हमें? हमको सिर्फ एक नोड गिवन है राइट. एंड आई जस्ट नीड टू रिटर्न उसकी कॉपी. ओके. इज इट अच्छा कनेक्टेड है ठीक है. वरना वी कुडंट मेक अ कॉपी अगर कनेक्टेड ना हो. सो एक काम करते हैं. अच्छा इट्स कनेक्टेड. मेरे को साइकिल नहीं करनी है राइट. ओके. बस एक डीएफएस तो लगाना है आई थिंक सो. या नहीं. टेन. So if I make a define DFS node comma copy node, right? Do I need to give it a copy node? What I'm thinking is when I come back, okay, let's see क्या होता है. मैं सिर्फ नोड देता हूँ राइट. I'm gonna be like okay visited भी चाहिए होगा. और ओके सबसे पहले तो visited में डाल देते हैं नोड को राइट.
And then I have to make a new node, right? So एक copy node बनाते हैं. अच्छा, उसके मेरे को नेबर्स भी तो देखना है. ओके, सो कॉपी नोड मेरे को बनाना है. अभी के लिए सिर्फ वैल्यू देते हैं, नोड डॉट वैल्यू. राइट. उसके बाद मैं इसके नेक्स्ट नोड पे जाता हूँ. फॉर नेक्स्ट नोड इन नोड डॉट नेबर्स. जो मेरा नेक्स्ट नोड है, राइट, डू वन थिंग. उन पे भी जाके डीएफएस बनाओ. राइट, उनका जाओ डीएफएस बनाओ. नोड बनाओ. अगर ये विजिट नहीं करा है, इफ नेक्स्ट नोड नॉट इन विजिटेड, तो ही जाओ. तो करो डीएफएस करो उस नेक्स्ट नोड का. राइट, एंड सेम विजिटेड दे दो. डीएफएस करा एंड इसमें रिटर्न कर देंगे हम जो भी नोड है. राइट. तो जो कॉपी नोड है, कॉपी नोड का जो नेबर्स है, नेबर्स है, उसमें अपेंड कर दो ये डीएफएस वाला. राइट. एंड देन ये सारे करने के बाद अपना ये कॉपी नोड रेडी है. वी कैन जस्ट रिटर्न दिस कॉपी नोड. राइट. एंड यहाँ पे आई कैन जस्ट रिटर्न डीएफएस नोड जो कि मेरे को मिला है. एंड विजिटेड तो एक सेट होगा, एमडी सेट. आई थिंक दैट्स ऑल आई हैव टू डू, होपफुली. नेवर माइंड. ओके. अच्छा, अगर नन हुआ तो अच्छा, मैं लेट मी डू वन थिंग. उससे प्रॉब्लम आ रही है यहीं पे. इफ node is none, return none. I think that's all I need to do. Okay, and I fucked up somehow. Hmm. So one दिया उन्होंने. Maybe. अच्छा, I know what the fuck happened. So एक बार मैंने DFS करा हूँ, right? So I'm at one. Excuse me. Right. So I was at one. I went to two, three, four. Right. I put four as visited. So when I come back from two, I do not go back to four again. I mean, uh, which is fine. But how do I make the connections again? Do I have to use a mapping to? Another thing I could do is just loop through the entire graph. Make nodes, forget the edges for now, just make nodes. And then
and then once again loop through the entire and then just put in the edges, right? I think that works. Yeah, I think that will definitely work, but I think there should be a better way. Can I prevent using the mapping? That is the thing. I complete two, right? I have visited four. I complete two. I then go back, right? Now I have to look at four. Now look at four. I say this four is visited. Okay, okay. If next node not unvisited, if it is already visited, I mean, even if it is visited, then can I just? अच्छा, that means if that node is visited, मतलब हमने उसकी copy बना लिया. So I need a way to reference that copy, right? So उसमें तो हमको mapping use करनी होगी, if I think so, because now I cannot just make a new node. I need a way. I need to reference the already made copy. Okay. Hmm. So if I have to make a mapping, nevertheless, I would rather not do this, right? I will let's make a mapping. Then I can say for okay. Then let's just make a DFS, right? Then I'm gonna say first of all vested dot add node. Then make a copy node. Make a copy node whose job is to just make copy equal to another node with the same value, right? And then copy nodes of this node is should be equal to the copy, and then I can go for next node and node dot neighbors next if next node not visited, then just do a DFS, right? That's all. And our DFS, now we have a mapping of our, let me just call this DFS now. Now the copy nodes consist of a mapping of all the nodes, right? Now all I need to do is make the edges. Now I can just say make edges. So I need the node and the visited as well, I think. I mean if I'm okay, मेरे को ये करने की जरूरत नहीं है. I can just say for node in copy nodes, right? Copy is equal to copy nodes का ये जो मेरा node है, और temp node कर दो because I need the node to return. Copy is equal to copy node और temp node, ठीक है. Then I can say अब इसके सारे जो भी एडजेंसी लिस्ट है उनको कॉपी कर लो. For next node and temporary node, instead of temporary node I should say original node. For original original original
original dot neighbors, राइट। क्या करो, जो कॉपी है उसके नेबर्स में वी कैन जस्ट ऐड कॉपी नोड और जो मेरा नेक्स्ट नोड है, राइट। एंड देन आई कैन जस्ट रिटर्न द कॉपी नोड, जो मेरा ओरिजिनल नोड था उसकी कॉपी। ओके, द if node is none, return none. ओके, बट इसमें हमने थोड़ी स्पेस यूज करी है, राइट। यप, ऑल्दो मे बी लेट मी सी, जो मैं पहले कर रहा था साला मैंने वो कंट्रोल जेड होगा इतना। ओके, या तो अगर मैं इसमें एक मैपिंग भी बना लूँ, राइट, एंड कॉपी नोड बनाने के बाद मैं बोलूँ मैपिंग का जो मेरा नोड है इसको दे दो कॉपी नोड में, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है, जो भी मेरा नेक्स्ट नोड था उसकी कॉपी तो चाहिए। तो मैपिंग ऑफ दिस माय नेक्स्ट नोड, दिस वर्क। मैपिंग एक एंटी डिक्शनरी, एक और जगह चाहिए होगा यार। मैपिंग, ओके यार, दिस ऑल्सो वर्क। a bit worse than time I guess, but क्या इसको ऑफ वन में कर सकते हैं? मेरे को दिमाग में नहीं आया, सो हैश मैप कांस्टेंट। आई मीन डीएफएस में तो स्पेस तो लेगा ही। ओके, अगर नहीं है वो तो मैंने कर दिया। व्हाट द फक डज दिस मीन? आई डोंट नो, बट स्पेस टाइम तो सेम ही रहेगा। आई मीन तुम वैसे भी विजिटेड तो तुम यूज ही कर रहे हो, सो एक मैप डाल दो, फर्क क्या पड़ता है। हाँ, वैसे भी यूज तो करना ही है तुमको, आई डोंट केयर अब। आई एम टू फकिंग लेजी टू understand that shit, man. Holy. Here given a number of variable pairs and an array of real numbers. What the fuck is this? What the fuck does this mean? I don't know. Acha, so a upon b is equal to, okay, is equal to 2.0.
एन बी वैसे ही, सो मेरे को ए वैसे ही निकालना है। होली फक सर, हाँ मल्टीप्लिकेशन करने को बोल रहा है। होली। अच्छा, और जो नहीं कर सकते दैट इज -1। ओह आई मीन एक, अच्छा समझ गया, इट्स अ बी एफ एस क्वेश्चन ओनली। आई मीन डी एफ एस नॉट बी एफ एस। सो अगर मेरे को लेट्स से ए बाई सी निकालना है, दैट मीन्स मतलब टॉप पे तो ये आना है, तो मैं ए से स्टार्ट करूँगा। कहाँ कहाँ टॉप पे आता है, राइट? आई थिंक दिस अ pretty easy question। ग्राफ बना लेंगे and then we just need to traverse for each query। इसलिए सर उन्हें लेंथ भी कम ही दी है, क्योंकि फॉर ईच क्वेरीज वी हैव टू, क्वेरीज कितनी है, फॉर ईच क्वेरी वी नीड टू डू अ ट्रेवर्सल। pretty easy। सो ग्राफ बनाने से पहले एक एडजेंसी लिस्ट बना लेते हैं। राइट, एंड देन आई कैन से फॉर ए कॉमा बी इक्वेशंस, या वो नहीं चलेगा। एन टू लेन ऑफ वैल्यूज दोनों सेम होनी चाहिए, वैल्यूज एंड उसकी लेंथ। ओके, फॉर आई इन रेंज एन व्हाट आई वांट टू डू इज एक ग्राफ बनाना है हमको। ए कॉमा बी इज इक्वल टू इक्वेशंस ऑफ आई, एक्स कॉमा वाई ले लेते हैं, मेक्स मोर सेंस। एंड देन जो रिजल्ट है दैट इज गोना बी वैल्यूज ऑफ आई, राइट? एंड जो अपनी एजेंसी लिस्ट है, एजेंसी लिस्ट ऑफ एक्स में डाल दो वाई कॉमा रिजल्ट। ओके, एंड अपना ग्राफ बन गया। देन एक रिजल्ट एरर बनाता है, फ्लोट्स की है ना। ओके, एक रिजल्ट एरर बनाने के बाद व्हाट वी कैन डू इज, ओके, सो फॉर एक्स कॉमा वाई इन क्वेरीज, मेरे को एक टी एफ एस भी बनाना पड़ेगा। व्हाट इज द एक्स, व्हाट इज द वाई, एंड जो रिजल्ट आया, राइट? रिजल्ट तो हम देगा ना, वो थोड़ी देगा। ओके, कर देते हैं रिजल्ट, क्या रहता है। फॉर एक्स कॉमा वाई डू अ टी एफ एस फॉर एक्स कॉमा वाई। रिजल्ट आई थिंक 1 डाल सकते हैं, आई एम नॉट श्योर। एंड इसको रिजल्ट डॉट अपेंड कर दो इसमें, एंड ये आई थिंक आंसर कर देते हैं, एंड वी कैन जस्ट रिटर्न रिजल्ट मे बी। अब ये देखते हैं ये कैसे होगा। राइट, एक्स कमा वाई में आई नो कि मेरे पे वाई क्या है, राइट? फॉर
For J in एजेंसी लिस्ट में जाओ एंड एक्स का ढूंढो राइट ये एक्स अपॉन कुछ है व्हाट इज द फक दिस शिट इज और जे कॉमा टेम्प आंसर राइट ठीक है हरे कृष्णा ठीक है अगर इफ इफ जे इज इक्वल टू वाई जो मैं ढूंढ रहा हूँ राइट जस्ट रिटर्न जो पहले था आंसर इनटू टेम्परेरी आंसर राइट डन दैट्स ऑल अदरवाइज अदरवाइज डू वन थिंग एक ऑफ कोर्स एक विजिटेड भी चाहिए यू नीड राइट what we'll do is if answer हमें क्लियरली जे वाई की इक्वल नहीं था राइट सो हमको एक्स बाई वाई नहीं मिला हमको एक्स बाई जे मिला ठीक है सो जे वाई वाई ढूंढो जे वाई वाई ढूंढो डू अ डी एफ एस जे वाई वाई ढूंढ रहे हम आंसर इज गोइंग टू बी नथिंग बट आंसर इनटू टेम्पररी आंसर एंड देन विजिटेड सेम एंड यहाँ पे बिफोर आई गो टू दिस आई कैन जस्ट गो विजिटेड डॉट ऐड जे yep या फिर instead of putting it over here I can add यहाँ पे visited dot add x and if elif j not in visited तभी करेंगे हम and अगर 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 end तक नहीं हम ढूंढ पाए पूरा डीएफएस कर गया ये कभी रिटर्न हुआ ही नहीं then we can just return minus 1.0 right okay and I am fucking totally wrong why the fuck am I wrong bro? let me see क्या एजेंसी लिस्ट ठीक से बनी है एजेंसी लिस्ट नहीं कहते एजेंसी मैप कहते हैं इसे पता नहीं क्या कहता है fucking नीचे डॉट केयर दो ए वाई बी 2.0 सही है बी वाई बी 3.0 ये भी सही है एजेंसी लिस्ट तो सही बनी है तो मैंने जब बोला इसको ए वाई सी ढूंढ के दिखा फक ये रिवर्स में भी है होली फकिंग शिट मैन दैट्स नॉट फेयर है या हुआ तभी ए वाई सी 6.0 तो आना चाहिए सिक्स क्यों नहीं आ रहा है
मैं कभी यहाँ पे जा ही नहीं रहा, दैट इज द प्रॉब्लम. This should not be the case. X, Y and then answer one set. पहले A को मैंने वो डाल दिया, राइट. फिर मैंने A के लिए जिस लिस्ट पे आया मैंने बोला B है, B को मैं 2.2. B क्या C के इक्वल था? नहीं था. ठीक है, तो मैं इधर आया. क्या B विजिटेड था? नहीं था. So I said B by C ढूंढो with an answer of 2. तो मैं B पे आया. B, मैंने B को विजिटेड में ऐड करा. इधर आया C पे. So ये तो इक्वल होना चाहिए. What the fuck. अच्छा, तो जब मैं इधर आया तो उसने ये करा. ओके ओके ओके, दैट इज अ प्रॉब्लम. तो यहाँ पे वो आने के बाद वो फिर ऊपर नहीं गया ना. ओके. मेरे को यहाँ पे रिटर्न नहीं करना, दैट इज द थिंग, राइट. मे भी रिटर्न करना है. नहीं, डेफिनेटली नॉट. आई कैन से इफ, अगर दिस इज नॉट इक्वल टू -1.0, आई कैन रिटर्न, जस्ट रिटर्न इट जो भी आया. भर्रा. ओके, आई नो व्हाट टू डू. नॉट द प्रॉब्लम इज what should be the best way to do that. नॉर्मली उसने डीएफएस कर दिया, उसको आंसर मिल गया, उसने आंसर ले आया. लेकिन फिर जब ए को आंसर मिला उसने बोला ठीक है, तो मैं क्या करूँ, वहाँ चल ना. सो आंसर इज इक्वल टू. ओके, 6.5 तो आ रहा है ना. और थिंग इज, मे बी मैं ये ना ढूंढ पाऊँ, राइट. सो इफ वापस कर लेते हैं, आंसर इज इक्वल टू दिस थिंग. अगर तुम्हें ये मिल गया, इफ आंसर इज नॉट इक्वल टू -1.0, तब तो रिजल्ट डॉट डिपेंड कर दो आंसर एंड देन जस्ट कंटिन्यू, राइट. अदरवाइज रिजल्ट डॉट डिपेंड कर दो. तुम्हें एक्स बाय वाई तो नहीं मिला, लेकिन मे बी तुमको वाई बाय एक्स मिले एंड तुम उसको 1 अपॉन वो कर सकते हो. ट्राई टू फाइंड वाई बाय एक्स, राइट. लेकिन जो भी आएगा इसको 1 अपॉन में ही अपेंड करना है. Okay. Hmm.
Now the problem lies with A by A. Okay. So A by A कुछ है नहीं. If x is equal to y, result result dot append one point of and then continue. अब क्या गलत है? X by x. अच्छा fuck. Okay. अबे तो x by x तो 1 ही होगा ना. Now that's some fucking bullshit, man. तो ये A by A कैसे निकाल रहा? It knows A by B. It knows B by A. Hmm. What are knowns, right? I mean, known. अच्छा, okay, I know the. यहाँ पे I have treated as a directed shit instead of an undirected. X append कर दो and 1 upon result के साथ. Right, this should work, I think. And अगर मैं इसको ये हटाऊँ, fuck this shit. X by y. Let's see अब क्या आता है answers. Yep, now it fucking works. Now it fucking works. एक छोटी सी चीज़ करनी थी. Yep, lovely. ये साला वो है क्या? Topological sort. Yeah, topological sort. Fuck this shit. I hate topological sort, man. मेरे से कभी I always it's not that कुछ मुश्किल है but मेरे से कभी याद नहीं रहता. I always forget that shit. And now oh no. God. Although मैं तो थक गया. बहन चोद. 54 minutes में ये टाइट फिश होगी बहन चोद आज तो. प्रैक्टिस नहीं रही. सारा तो कर रखा है. Let's try this. बात 2000 नहीं क्रॉस कर पाया. आई मीन एक कंटेस्ट और लगेगा सारा.
और इसमें -6 हो गया। मैं इवन मैं हो जाए। अभी बताओ ये फेयर है? हाउ इज दिस फकिंग फेयर मैन? 26 मिनट में मैंने 26 मिनट में 3 सवाल कर लिए। 2871 रैंक। -6। -6। कम ऑन कम ऑन। ये तो बिल्कुल फेयर नहीं है। जो देखते हैं, या तो ये सवाल करके आई वुड लीव, या फिर अगर ये बहुत मुश्किल हुआ सो मे बी ही भी ना, बट 1 मिनट दो मेरे को बिफोर आई स्टार्ट। ओके। S1 S2 S3 is found by interleaving of S1 and S2. N minus M. Come on. ओके, एक गैप हो सकता है। होली फकिंग शिट, ये क्या टट्टी सवाल है? होली फक। श्योर मैन, और कोई डिमांड है तुम्हारी? और कोई डिमांड है? होली फक। ओके, सो अब क्या करूँ मैं इसका? हाउ कैन आई सॉल्व दिस? आई मीन देख के तुम्हें को पता है ये डीपी लग रही है, बट ये दिस इज अ गुड क्वेश्चन। राइट। प्रोफेसर ए को रिटर्न क्या करना है? ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है। ओके। मैं तो इसको इन उसमें करने की सोच रहा था। लाइक आई जे के बेंच एन क्यूब टाइम एंड एन क्यूब स्पेस। क्या ये 3D डीपी है और इज दिस? हाँ, 3D या 2D या 1D?
आई जे के में 2 to 6. Yep. I think so. IJK. Let me see, man. अगर मैं फॉल्स मान लूँ पहले सब जगह, in range L2 or dash in range L1. Right. IJK. Then how do I start solving? Right. I can say base case or my fucking base case. That for I in range K से करते हैं, right? K in range L3 for I in range L1 for J in range L2, right? अच्छा मतलब एक चीज़ तो मैं कर ही सकता हूँ टू फकिंग आई नो कि आई प्लस जे हैज़ टू बी इक्वल टू के, राइट? सो मैं दो में लूप लगा के आई डोंट रियली नीड जे, आई नो दैट फॉर श्योर. सो लेट मी जस्ट टाटा बाय बाय, राइट? जब मैंने एक को टाटा बाय बाय कर दिया आई कैन ऑल्सो टाटा बाय बाय उसका पहला वाला. बट ओके, लेट्स सी. इफ आई प्लस जे प्लस 2 इतने कैरेक्टर्स है, राइट, इज नॉट इक्वल टू के प्लस 1, यू कैन जस्ट रिटर्न किए, ऐसा तो बन ही नहीं सकता. नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तो सेम होने चाहिए, राइट? राइट, कुछ भी करो. अगर 0 0 तो मतलब एक एक आ रहा है उसमें, अगर 0 है ये सिर्फ एक आ रहा है, राइट?
sorry, not return but continue, वरना. Okay, this is a valid point, है ना, ये valid है. अब बेस केस, if जो मेरा के है वो ज़ीरो है, दैट मीन्स एक के डिजिट में ढूंढ रहा हूँ. राइट. ओके. अच्छा, वो तो कभी हो ही नहीं सकता. वो मेरे को लूप के बाहर ले जाना पड़ेगा. बिकॉज जब मेरा K1 है, आई कैन ओनली टेक वन स्ट्रिंग. राइट, सो इसको मैं बाहर ले जाता हूँ. एंड आई कैन से if deep if s3 of 0 is equal to s1 of 0. अच्छा, लेकिन फिर वो ये नहीं काम करेगा. I will have to somehow. ठीक है, यू नो व्हाट, ये अच्छा सवाल है. आई वांट थिंक अबाउट इट. एंड मेरे वैसे भी अभी सिर्फ 5 मिनट या 2 बजे आई हैव टू गो. सो 5 मिनट में तो आई कैन, माना आई कैन डू इट, बट मतलब बहुत ही रफ में. आई वांट टू क्लीनली राइट इट. सो आई एम गोना स्टॉप द स्ट्रीम. अपना मस्त करूँगा मैं. एंड आई विल सी यू